Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to you all. From the platform of English Buffet.5, I am going to impart you something very important, which is adjectives that can be ending on ed or ing. So viewers, this looks very ordinary, yet it is very important so far as the everyday grammar is concerned, right? हमें डेली ग्रामर से किसी न किसी लिहाज से वास्ता पड़ता है एंड इफ़ वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर इन प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग English and appearing in different exams and tests, then we have to be very much, you can say, sure about the difference of these two sorts of adjectives, right? Before moving ahead, you have to recall to your mind कि adjectives होते क्या हैं, right? Adjectives को उर्दू में हम viewers इसमें सिफ्त कहते हैं, मतलब क्वालिटी किसी चीज़ की बताना, और इसकी different kinds हैं. Quality can either be good or bad, right? So किसी की सिफ्त जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. So that's all. लेकिन अब डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमारे सामने आते हैं एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि क्या एडजेक्टिव जिस तरह के ये वर्ड्स हैं लाइक ब्लैक, रेड, सैड, सोरोफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस एट्सेट्रा, क्या यही एडजेक्टिव्स होते हैं? सो द आंसर इज़ नो. Even the words which look like, you can say, verbs, they can be serving as adjectives, right? इसी वजह से ये दिखने में forms of verb आपको लगेंगी, लेकिन इनका actual function क्या होगा? Adjective का मतलब they will be telling us the quality of some noun, etc. So adjectives can be ending on ing or ed as well, right? So अब इन दोनों का difference क्या है? This is my today's target. So hopefully you are going to vanish your doubts regarding these two sorts of adjectives. अब इनका डिफरेंस क्या है व्यूअर्स? दिखने में ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी, आईएनजी फॉर्म और सेकंड और थर्ड जिस तरह से एंड होती है ईडी फॉर्म. लेकिन एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है? आईएनजी एडजेक्टिव्स समटाइम्स वी कैन से दे टेल अस अबाउट समथिंग और समवन डायरेक्टली. जैसे कि मैं कह सकती हूँ येस्टरडे आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी. सो द क्वालिटी ऑफ मूवी इज़ दैट इट वॉज इंटरेस्टिंग. सो दिस वर्ड इज़ क्वालिफाइंग द नाउन मूवी. ये एडजेक्टिव का मेन फंक्शन है कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में मज़ीद हमें बताएगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, राइट? सो इंटरेस्टिंग मूवी. इस तरफ देखें तो ये ईडी वाले जो एडजेक्टिव्स हम कह सकते हैं, दे टेल अस हाउ पीपल फील, राइट? आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री. So this is an adjective describing how people feel. In the same way, यहाँ पे देखें, this teacher is boring or this is a boring teacher. This is the quality of that teacher, that he or she is boring. She is bored of that teacher. अब यहाँ पे ed again, it is adjective. ये भी इसमें सिफ्त है, but it is telling us about the feeling of someone. This is this person, she, right? So I hope कि ये difference आपको clear हो गया है. Let me give you some more examples. I am interested in astronomy. This adjective is describing the quality of us, you can say the feeling of someone, that is I am disappointed with my exam results. So disappointed is a quality of this person. He is feeling this, you can say feeling or emotion. On the other hand, astronomy is interesting. My exam results are disappointing. So ing form में या ed form में both can be playing the roles of adjective. So the thing is that how to use them, this is what will make you differentiate them easily, right? One will be telling the, you can say, feeling or emotion of someone, and second, that is ing, will be telling us the state of someone, right? Directly. Astronomy is interesting. This is something which is being described by this word. I hope you are getting. कुछ और examples देखें. This book is boring. I am bored with this book.
Both are adjectives, but the difference is ed and ing. The project was quite exhausting. I was quite exhausted because of this project. This is how these are the different verbs which can be playing the role of adjectives differently. The thing is that we have to know how to use them accordingly, right? Excited say exciting, worried say worrying, bored say boring, and surprised say surprising, right? एक और एग्जाम्पल देखें. I was very frustrated that I couldn't go surfing. This is someone's emotion or feeling working as adjective. This word is working as adjective. And lastly, I couldn't join in the conversation, which was very frustrating. So the point is how to use these two sorts of adjectives which are ending on ed and ing. यहाँ पे एक बात व्यूअर्स आपने जहन में रखनी है कि इनका दूसरा नाम जो है it is present participle, that is ing, and past participle, that is ed. Students will know, they will be able to understand कि what I am saying. वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं, एक तो वो रोल प्ले करती हैं एक्शन वर्ब्स का, और एक उनका रोल है इफ़ दे आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, राइट. सो दीज टू फॉर्म्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ed फॉर्म एंड ing फॉर्म विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, दे आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. ये पॉइंट भी आप जहन में रखिएगा. दोज हु आर getting faced with, we can say, different sorts of tests and exams, because इस तरह की confusing चीज़ें अक्सर जो हैं वो एग्जामिनर्स पूछते हैं. सो एक आसान तरीका है इनको याद रखने का बाय द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. सी दिस कैट इज़ सो फ्राइटनिंग. मतलब ये दिखने में बहुत ज़्यादा क्या है, फ्राइटनिंग, डरावनी है. इस तरफ देखिएगा, दिस कैट इज़ फ्राइटेंड of the dog, you can say. So this adjective is describing the feeling of this person or thing, and this is what we can say, this is describing this animal, cat. So ing वाले जो adjectives हैं वो directly किसी को explain करेंगे, किसी person, place और thing को, जबकि ed वाले जो हैं उनके emotions को बताएंगे, उनकी feelings को बता सकते हैं, right? इनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इस तरह से भी व्यूअर्स आपको एग्ज़ाम्स में या टेस्ट्स में एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं कि इन दोनों में से चूज़ करें. आई एम ऑलवेज डैश इन द मॉर्निंग. सो व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट टायरिंग और टायर्ड? आई एम ऑलवेज टायर्ड, राइट. आर यू बोर्ड और बोरिंग? व्हाट डू यू थिंक? सो यू हैव टू आंसर, you are boring. He is bored. These books are boring. Okay. This chair is relaxing. I am very relaxed now. This is how by you can say passing through different sorts of sentences and using these two sorts of adjectives, you can make yourself able to understand and practice these adjectives easily. So I hope you are getting what I am trying to say and you will definitely practice over it. Just remember one thing. ing makes you feel ed. कैसे? An interesting book makes you feel interested in it. Okay? Doing something annoying makes you annoyed. Seeing something amusing makes you feel amused. So keep on practicing, keep on learning. Thanks for being attentive. If you are new to the channel, you can subscribe it for getting more videos. You can share them with others for their betterment also. So keep watching, keep learning and keep practicing. Stay blessed. Take care of yourself. Allah Hafiz.